Hello and welcome to my channel Be Unique Studies. So today we are going to understand the first lesson of history, class 10 SSC, which is historiography development in the West. So let's start. Historical research, writings and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. Means what? हम historical research क्यों करते हैं? Why do we do that? Or historical studies or historical writings? We have certain aim in front of our eyes, and that aim is to understand the chronology of the past events. Chronology means sequence of the events. कौन से event के बाद कौन सा event आया? That sequence we need to understand. So for that we study history. And other one reason is that to understand their interconnection, the interconnection between the two events, the interconnections are there, some interconnections are there. To understand those interconnections we do historical research, and this is a continuous process. Means continuously we are trying to peep into the past and find various chronology, means find various past events and try to arrange them in a chronological order. So this is a continuous process. Now let's move further. In physical and natural sciences, the empirical method, that is laboratory method of experiments and observations, is used to verify the available knowledge. Means what? Empirical method means what? The method of laboratory experiments and observations. So in this method, what we do is we perform certain experiment. We go into a laboratory and perform a experiment and observe it and note down its observation. So this is empirical method. But where we use it? We use it in physical and natural sciences. Physical and natural sciences means what? The sciences which we study in school, or the sciences about which the scientists research. That are physical and natural sciences. So here we can use empirical method. And what happens in empirical method is that here we can formulate laws. We can formulate laws means what? We can form laws that remain true irrespective of time and space. Means that laws never change. मतलब वो laws अगर form हो गए इस empirical method में ना, then that laws are universal laws. मतलब कहीं भी जाओ universe में, कौन से भी time period में जाओ, it will not change at all. Like take example of Newton's laws of motion. He had given those laws in past. At that time also they were true, in the present they are also true, and in future they will be true. They will not change. So here we can formulate laws that remain true irrespective of time and space. Means they can never change. अगर हमने अभी law formulate किया है ना, तो law वैसा ही रहेगा. As it is that law will be. वो कभी change नहीं होगा. And that laws can be tested and proved repeatedly. Means what? We can test that laws and prove it repeatedly. Like Newton's first law of motion, I'll go in the laboratory and take a beaker, cardboard sheet and a coin, and I can perform that experiment, and that law can be tested and proved repeatedly. 1000 बार हम वो law prove कर सकते हैं. 1000, 2000, many times we can prove it. बट हमने ये स्टडी किया किसके बारे में? फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस. उसमें हम ये मेथड यूज़ करते हैं. बट हमारा मेन टॉपिक तो क्या था? हिस्ट्री. सो व्हाट मेथड वी यूज़ इन हिस्ट्री? सो वो हम देखेंगे. क्या यही मेथड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी. In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. Means what? In history, we are unable to use the empirical method. यहाँ पे हम ना किसी भी हद तक जाए पर empirical method नहीं यूज़ कर सकते. वहाँ कुछ reasons है इसके पीछे, and that reasons are we were not present in the historical time and space. मतलब क्या कि जब ये events हुए थे हम उस जगह पर present नहीं थे. We were not there in the past. जब वो इवेंट पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, अगर हमें उसी इवेंट के बारे में कुछ फाइंड आउट करना है तो हम ये मेथड नहीं यूज़ कर सकते एम्पिरिकल. वाई? क्योंकि हम उस टाइम में प्रेजेंट नहीं थे जब ये इवेंट हुआ था. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. हम उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते हिस्टोरिकल इवेंट्स को. क्यों? ये कहते हैं, मेरे माइंड में सडन आइडिया फ्लैश हुआ दैट फिल्म्स एंड मूवीज़, some serials also depict past life, right? So there what do you think? They recreated the history? The answer is no. They tried to recreate it, but each and everything is not there in that. So it is unable to recreate history. And also in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. जैसे हमने empirical method में देखा था कि law जो हम बनाते हैं ना, that remain true irrespective of time and space. Means अगर हम कहीं भी जाए, कौन से भी टाइम में ट्रैवल करें, तो वो जो laws है ना जो empirical method में फॉर्म होते हैं, they will not change at all. But in history में ऐसा नहीं है. In history that laws can change. That laws can change. Like suppose I am a historian, I researched about some event,
एंड मुझे कुछ तो मेरा रिसर्च मिल गया, आई गॉट समथिंग, आई गॉट अ आउटकम, आई फॉर्मुलेटेड सम लॉ, आई गिव सम theory about that particular event. But other historian also studied about the same event which I studied, and he got some other observations. So हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज नो वन नोज वॉट हिस्ट्री इज़, हिस्ट्री में क्या हुआ था. सो जो एक लॉ है ना वो यूनिवर्सली कभी भी ट्रू नहीं होता, बिकॉज न्यू हिस्टोरियंस विल कम एंड दे विल गिव देयर न्यू थेरीज, दे विल फाइंड समथिंग न्यू. सो हिस्ट्री में कभी भी जो लॉज हम फॉर्म करते हैं ना, दे नेवर रिमेन ट्रू. देन फर्दर अब हम एंटायरली स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री. सो नाउ लेट्स बिगिन टू डू द हिस्टोरिकल रिसर्च. Now to begin this historical research, no, we will need an expert. Expert मतलब कौन, we will need an expert मतलब एक person चाहिए होगा who knows the language और script of a historical document. मतलब क्या, वो जो expert, अगर हमारे पास कोई document है ना, to in order to read and understand its meaning, no, we will need an expert. Why? बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं चला एक्चुअल उस डॉक्यूमेंट में है क्या, तो हम क्या हिस्टोरिकल रिसर्च बनाएंगे, क्या लॉज बनाएंगे. So we will need an expert who knows the language and script of a document in order to read and understand its meaning. Also, the experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamps of authority, etc. मीन्स वॉट, वो जो एक्सपर्ट होगा ना वो ऑथेंटिसिटी चेक करेगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की. ऑथेंटिसिटी मीन्स जेन्यूननेस, ही विल चेक द जेन्यूननेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, वेदर इट इज़ रियल और इट इज़ फेक. हाउ विल ही डू दैट, मतलब उसके पास तो कुछ तो होना चाहिए ना, समथिंग ही विल बी नीडेड. सो ही हैज़ अ क्राइटेरिया. व्हाट दैट क्राइटेरिया इज़ लेटरिंग स्टाइल. लेटरिंग स्टाइल कैसे लिखा गया है वो, उससे हम टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं कि इन विच टाइम दैट मे बी रिटन. ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, कौन से ऑथर ने लिखा होगा वो. मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर मीन्स उस पेपर की मैन्युफैक्चरिंग डेट, लाइक मतलब वो कब मैन्युफैक्चर किया होगा, वो कार्बन डेटिंग से वगैरह पता लगा सकते हैं. And moreover, stamps of authority. In the past, many stamps of authorities were used. Means kings used to give their royal stamps on documents, important documents or something. So that can be checked. And then such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. Means what? Then further now here role of historian comes. ये historian क्या करेगा, वो जो document होगा ना हमारे पास, he will scrutinize it. Means what? He will examine it very very carefully and check whether each word is true, each word is real or not. He will check it. But how he will check? He will check with the help of relevant historical references. Means he is a historian, so he will be having some material with him, like historical material, मतलब oral sources होंगे, material sources और written sources, something he may be having, no, material historical references होंगे उस relevant time के, so he can compare with it and he will check it. Now हम actually jump करते हैं how this historical research method actually is. अगर हमें कुछ research करना है and then we will have to write a historical narrative, then how we will do that? Now let's check it. So this historical method is like this. First one is writing, this is writing of historical narrative. How will we do that? So first step is formulating hypothesis. Hypothesis means what? We need to formulate assumptions. हमें कुछ assume करना होगा. We need to assume something. So that assumptions are totally based on ours. Means वो assumption क्या करना है वो हम decide करेंगे. अगर particular document हुआ तो हम assume करेंगे कि ये document इस period का होगा, ये document इन्होंने लिखा होगा. Like that we will assume it. So then what we will do? Critically examine various sources of history. Critically examine various sources of history means what? Now we will critically examine, मतलब very carefully will examine various sources of history. Various sources of history means what? वही जो हमारे पास document है ना उसे हम examine करेंगे खुद से. Then after that examining relevant reference of available historical information. अभी हमने खुद से examine किया ना. Now then what we will do? We will examine it with the help of relevant references of the available historical information. मतलब क्या, अगर हमें historical narrative लिखना है ना, then we will be a historian, right? जो कोई भी होगा अगर उसे करना है ना तो ये historian होगा या someone scholar he will be. So he will go and search for the historical documents of the same time period of which this document is. वो जो हमारे पास है ना
वो जिस टाइम का है ना, हम अज्यूम करते हैं उसी टाइम के कुछ डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, नाउ हियर कंपेयर करेंगे वो, एंड देन ही विल एग्जामिन इट. And after that, collecting historical information, highlighting the processes that led to historical transitions and carrying out comparative analysis. मतलब अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है ना उसके बारे में, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में वो हमें कलेक्ट करनी होगी. And we need to highlight the processes that led to historical transition. You'll ask why we need to highlight the processes that led to historical transitions. मतलब क्या ना, हिस्ट्री में ना हिस्टोरिकल ट्रांजिशन ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस ना हमें बहुत कुछ पता चलता है. लाइक अगर कुछ एग्जांपल लेंगे ना तो कुछ भी देखें ना हम, तो ये जो ट्रांजिशंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स इज दैट इन ट्रांजिशंस में ना क्या होता है, जब भी ये हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस होते हैं ना, देन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट होने के पहले जो हुआ था ना, जो कुछ उसी की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी. सो वो जो ट्रांजिशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, अगेन हमें एनालाइज करना होगा ये हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस को अंडरलाइन करने के बाद, हाईलाइट करने के बाद. देन आफ्टर व्हाट विल डू, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल्स यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. मतलब क्या, अब हमें समझना है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स. मतलब क्या, अब हमारे पास जो रेफरेंसेस है ना उसे हमें अंडरस्टैंड करना होगा, फुल्ली अंडरस्टैंड करना होगा उस टाइम के. विल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑफ दैट हिस्टोरिकल इवेंट. मतलब हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस, हमने यहाँ पे कुछ अज्यूम किया था ना, क्या अज्यूम किया था ना, उसके रिगार्डिंग जो रेफरेंसेस होंगे ना उसे हमें क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना होगा, मतलब कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना होगा. एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, यहाँ पे न्यू टर्म है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स मीन्स व्हाट, इफ आई एम अ हिस्टोरियन एंड आई वांट टू डू रिसर्च, नो आई विल फॉर्म समथिंग, मतलब मेरा कुछ क्राइटेरिया होगा, आई विल हैव सम क्राइटेरिया, दैट क्राइटेरिया इज माइन. सो वो जो क्राइटेरिया होगा ना, दैट क्राइटेरिया ऑफ डूइंग हिस्टोरिकल रिसर्च और समथिंग एल्स इज कॉल्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. So we need to study various conceptual frameworks adopted by historians in the earlier times to study the same thing. मतलब ये जिस टाइम का डॉक्यूमेंट है ना उसी टाइम के जो रेफरेंसेस होंगे ना, मतलब क्या नहीं, उसी टाइम वही जो रिसर्च कर रहे होंगे ना हिस्टोरियंस इसी टाइम के, तो उससे उस क्राइटेरिया को हमें समझना पड़ेगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. उन्होंने कैसे ये स्टडी किया, ये इस पर्टिकुलर टाइम का डॉक्यूमेंट उन्होंने कैसे स्टडी किया. Then formulating relevant questions in view of the historical references. At last हमें ये questions form करने होंगे. Questions form करने होंगे means what? हम ये बता नहीं सकते कि anything is true until when we ask questions. Questions play a very important role here. अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे and we'll get answer, then we are on the right track. We can understand that we are on the right track. But if we won't get any answer at all, और वी गेट somehow आंसर, मतलब कुछ भी करके अगर आंसर मिले ना, मतलब सीधे आंसर अगर नहीं मिल रहा, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये हमारा रिसर्च ना इस पर कुछ तो कमियाँ रह गई होंगी. एंड इफ़ वी गेट आंसर देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक. वी मस्ट अंडरस्टैंड इट. एंड दिस all is our historical research method. This is the way how historians do historical research, and after that research they write historical narrative. Now let's move further. Methods of various disciplines are used in historical research. Disciplines are used in historical research. Disciplines means what here? Disciplines no are something device. Device नहीं कह सकते हम, but less or more similar to devices which help in historical research. So what are they? Let's check it. For example, archaeology. Archival science, manuscriptology. So archaeology means what? Study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. Means what? हमें ह्यूमन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी में क्या होता है जनरली, हम ह्यूमन हिस्ट्री स्टडी करते हैं, पर कैसे एक्सकैवेशंस करके, एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स एंड वो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं ना, वो आर्ट के मटेरियल्स लाइक सम स्टैचूज हो गए और समथिंग लाइक दैट, फिजिकल रिमेन्स जो होते हैं ना उन्हें स्टडी करके, उनका जो स्टडी करते हैं ना उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं. आर्काइवल साइंस. देन आर्काइवल साइंस मीन्स व्हाट? स्टडी एंड थियरी ऑफ बिल्डिंग एंड क्यूरेटिंग आर्क्यूज. मीन्स व्हाट?
क्यूरेटिंग मीन्स व्हाट, सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब जो पास्ट में जो ये करते थे ना, आर्क्यूज बनाते थे. आर्क्यू मीन्स व्हाट, इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड. सो इन द पास्ट हाउ दे यूज टू मेक द आर्क्यूज. सो वो जो स्टडी एंड थेरी है ना, वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. हाउ टू मेक दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, हाउ टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स, हाउ टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज दोज आर्क्यूज, दैट वी गेट इन आर्कियोलॉजिकल साइंस. Then next comes manuscriptology. Manuscriptology देखते ही पता चलता है. Manuscriptology is made up of two words, manuscript and logy. So manuscriptology means what? Study of history. Study of history and literature through the use of handwritten documents. Handwritten documents means what? Manuscripts. So study of history with the help of handwritten documents is called manuscriptology. Then further epigraphy. Epigraphy means what? Study of inscriptions. जो inscriptions है उनका स्टडी करना, that is epigraphy. एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, जैसे पहले भी बोला है कि लेटरिंग स्टाइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑथर्स ऑफ पर्टिकुलर टाइम यूज अ सर्टन लेटरिंग स्टाइल. सो उस लेटरिंग स्टाइल से ना बहुत कुछ हम पता लगा सकते हैं, बिकॉज एवरी ऑथर ऑफ एवरी टाइम, मतलब कुछ सब 5th सेंचुरी का ऑथर और 6th सेंचुरी का ऑथर, भले वो किसी सिंगल थिंग को ही डिप्लेट करते हो अपनी राइटिंग्स में, लाइक दे मे राइट अबाउट किंग्स, देयर बायोग्राफीज, पर उनकी राइटिंग स्टाइल में ना बहुत डिफरेंस होता है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल में. सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. फर्दर लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स मीन्स व्हाट? लैंग्वेज का स्टडी करना, दैट इज लिंग्विस्टिक्स. न्यूमैस्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स. फर्दर जीनियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ lineage, दैट यू मे बी नोइंग. Now let's move further. अब ना हम the name of the lesson is what the name is, historiography, development in the West. But what does this historiography exactly means? हमें स्टडी करना है हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, बट अब तक तो हम वहाँ तक पहुँचे नहीं. देन लेट्स सी what it is exactly. So tradition of historiography means first we will learn historiography का जन्म कहाँ से हुआ, from where it had taken place. We have learnt about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. मतलब क्या, अब तक हमने सब कुछ देख लिया. How we do historical research, how we do historical writing and something, everything we saw that. Now we'll move forward. Writing of critical historical narrative is known as historiography. मतलब जो हम यहाँ पे जो रिसर्च करेंगे ना, सब कुछ यहाँ पे हमने इतना सारा रिसर्च किया, हमने क्यों किया? हमें कुछ तो लिखना है, वी नीड टू राइट समथिंग, हमें कुछ रिपोर्ट बनाना है इस रिसर्च पे. एंड दैट रिपोर्ट मीन्स व्हाट? क्रिटिकल राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव. क्रिटिकल नरेटिव है ना, इतना क्रिटिकली एग्जामिन किया ना, एक एक लाइन चेक किया हमने वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट. सो दैट क्रिटिकल राइटिंग इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी. सी राइटिंग ऑफ दिस हिस्टोरिकल नरेटिव इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. And a scholar who writes such a narrative is a historian, and the one who writes this is called a historian. Then historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by historian often depends on the conceptual framework adopted by him, and his style of writing is determined by that framework only. Means what? If I am a historian, then I will not include each and every event of the past in my writings. Why? क्योंकि जो इंक्लूजन एंड इंटरप्रेशन ऑफ डाटा मीन्स जो आई विल राइट, वॉट एवर डाटा आई विल इंक्लूड इन माई हिस्टोरिकल रिसर्च, नो, that will depend on my conceptual framework, it will depend on my criteria. Like suppose I want to make a narrative on Mahatma Gandhi, then I will not include other leaders in it, right? Subhash Chandra Bose का हम separate बनाएंगे rather than including his narrative in this book. So that is there. मतलब हम each and everything नहीं include करते. अब अगर हमें स्टडी भी करना होगा ना, तो हम पर्टिकुलर टाइम का स्टडी करते हैं, राइट? सपोज आई वांट टू स्टडी अबाउट द रूल ऑफ किंग अकबर, एम्परर अकबर, देन आई विल गो फॉर हिज बुक ओनली, सिंगल बुक. हम एंटायर हिस्ट्री का एक बुक नहीं बना सकते, राइट? इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस, और उस बुक को स्टडी करना भी बहुत हार्ड होगा. एंड his style of writing is determined by that conceptual framework. मीन्स वो जो conceptual framework ना, इस राइटिंग स्टाइल भी टोटली एंटायरली विल बी डिपेंड ऑन दैट conceptual framework. मतलब वो क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है हिस्टोरियन, वो सब कुछ इस conceptual framework पे ही बेस्ड होगा. Now, tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. However, that doesn't mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. मतलब क्या, हिस्टोरिकल नरेटिव
when we started writing it, we started writing historical narrative now. Recently we started it. So in the past societies they didn't used to do that, right? So इसका मतलब ये नहीं कि वो जो लोग थे वो कुछ क्यूरियस नहीं थे अबाउट देयर हिस्ट्री. इट डजंट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑल्सो. ऐसा भी लगेगा ना कि वो अवेयर नहीं थे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था अबाउट द पास्ट इवेंट्स, अबाउट हिस्ट्री. सो दिस वॉज नॉट देयर. Actually they were eager, they also felt need to pass their stories of failure. मतलब जो stories है उनके ancestors की, courage की, like उस टाइम में अगर उन्होंने कुछ war वगैरह फॉट किया होगा, वार में गए होंगे वो, तो वो जो उनकी स्टोरी है ना, उनके courage की स्टोरी, they also felt that this story must go on to our next generation. हमें सिर्फ क्या बोलते हैं, we will pass the stories further. So what they did, the ancient communities all over the world use means like cave painting, storytelling, singing songs and ballads for this purpose. Means what they did, they sung songs in the memories of that ancestors. They used to tell stories like how our grandparents tell the stories in the similar way, and singing songs and ballads like that for this purpose. एंड दिस वर द ट्रेडिशनल मीन्स. मतलब ये पुराने ज़माने में ऐसा लोग करते थे. दे यूज टू डू केव पेंटिंग्स एक्सेट्रा. बट नाउ these only ancient traditional means are looked upon as the sources for modern historiography. हम उसी के लिए we go for that only for doing our modern historiography research. और यहाँ पे भी जो हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं ना, वो भी उसी टाइम के होते हैं. इट मे बी केव पेंटिंग्स, उनके सॉन्ग्स एंड बलाड्स, मोस्ट ऑफ द वी गेट हियर ओनली. यहीं पे हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वही हम यहाँ इस रिसर्च में यूज़ करते हैं. देन फर्दर, डू यू नो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लोवेयर म्यूजियम? हियर अ पिक्चर इज शोन. In this picture what they have shown is, they have shown a forward matching file of soldiers. Means what? This is a forward matching file. Means what? Group of soldiers, they are going forward, and this is their general, and he is standing in front of them all, and these soldiers are holding, see, these are their shields, and here somewhere their spears are also there. See, here spears are there of those soldiers. And this is what, this is the inscription. and जो ट्रेडिशन है ना इंस्क्रिप्शंस का, मीन्स रिकॉर्डिंग इवेंट्स लाइक दिस. मतलब in the past what the people used to do, they used to make cave paintings. So this is another method. Now here people used to do inscriptions, and this tradition can be traced back to Sumer civilization in Mesopotamia. Sumer civilization in Mesopotamia means वहाँ पे लोग रहते थे, like Harappan civilization, like that Sumer civilization, but in Mesopotamia. And they had a habit of doing this. मतलब like they used to write names of Sumerian kings and the stories of battles fought by them on inscriptions, and we have preserved all those inscriptions, but not all those, but some of those inscriptions we have preserved it. No, sorry, they have preserved the stories of battles fought by their kings in those inscriptions. And this inscription, no, this is the earliest inscription in the world, and it dates back to 4500 BC. BC means before Christ era, BCE. And it records a battle fought between two kingdoms. This is of battle and between two kingdoms, and it is now displayed at the Louvre Museum, which is in France. Now let's check about the characteristics of modern historiography. Now here we saw these all ancient means are a source for our modern historiography. Now let's check what this modern historiography is. So their modern historiography has 4 main characteristics. So what are those characteristics? Let's see. Its method is based on scientific principles, and it begins with the formation of relevant question. Means what? ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का जो मेथड है ना, रिसर्च मेथड, मतलब हम जो यहाँ पे करते हैं ना, ये रिसर्च जो है ना, ये जो है ना टोटली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए. दिस मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एंड इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन. जैसे कि यहाँ पे बताया था कि क्वेश्चन पूछना ना बहुत इंपॉर्टेंट है. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड वेदर आवर रिसर्च इज राइट और नॉट, वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. एंड दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. मीन्स व्हाट? यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे ना, दैट क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन डीड्स.
these are all entirely about the past human deeds. Anthropocentric question means related to past human deeds of a particular period of history. And most importantly, history does not suggest any interrelation between the divine and human deeds. And now we formed questions, and now answers to these questions are supported by reliable evidence. हमें कुछ evidence चाहिए ना, मतलब दी आंसर अगर हमने यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चंस का ना, वी गिव आंसर हियर, आंसर दिया, बट हाउ विल वी से दैट? लाइक इन ज्योमेट्री you have theorems, you prove that. Now you need reference, no, something you give reason here, something in bracket you write reason. Similar way here also you need to give proofs, you need to give evidence. Evidence means proofs only. So, and one more characteristic is that history present a graph of mankind's journey with the help of past human deeds. मतलब क्या, history will be a graph. हिस्ट्री क्या देता है? हिस्ट्री एंटायरली क्या है? हिस्ट्री इज अ ग्राफ. बट किसका ग्राफ है? मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स. जो हमारी मैनकाइंड की जर्नी थी, लाइक डिस्कवरी ऑफ फायर, स्टोन एज होगा, एक्सेट्रा व्हाट इट मे बी. हमने पहले ब्रास को डिस्कवर किया, अलॉय बनाए. दैट एवरीथिंग कम्स इन मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स. ये हिस्ट्री ना टोटली ग्राफ ही है विच डिप्लिक्ट्स ह्यूमन डीड्स, पास्ट ह्यूमन डीड्स. And it is said that the modern historiography with above characters has its roots in the ancient Greek writings. Roots मतलब क्या होता है ना? Roots are the plants जो होते हैं ना, plants के roots क्या होते हैं? उनका most important part is their roots, because roots only transfer water, minerals, etc. to the other parts of the plant. Similarly, roots of this modern historiography with these characters is in the Greek historical writings. मतलब जो कुछ अब तक किया ना ये हिस्ट्री का रिसर्च, सबसे पहले हुआ था ग्रीक में. लाइक मतलब ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये पहले ग्रीक में यूज़ किए गए थे. हाउ हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, मतलब हिस्ट्री ये भी एक ग्रीक टर्म है. दिस इज अ ग्रीक टर्म. And Herodotus, he was a Greek historian of 5th century BC, and this guy used the term history first time in his book entitled The Histories. मतलब he had written a book whose name was The Histories, and in this book only he first time used the word history. Make sure that you like and share this video. Also subscribe the channel for more updates.